हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इन द गिवन सर्किट विद द स्टेडी करंट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर में बी। अगर स्टेडी करंट हो गया इसका मतलब जो कैपेसिटर है, देखिए राइट, इस क्वेश्चन में यूं है, ओके इसमें स्टेडी करंट हो गया इसका मतलब कैपेसिटर इज फुली चार्ज। सो व्हेन द कैपेसिटर इज फुली चार्ज तो इसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि नो करंट विल फ्लो अक्रॉस दिस। सो दिस ब्रांच विल बिकम ओपन सर्किट। ओके, सो द करंट सिर्फ इसमें फ्लो करेगा, आउटर वन में ऑन एट स्टेडी स्टेट। ओके, उसके बाद पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। सो इस सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं। इस बाहर वाले करंट में जो जो बाहर वाला जो लूप है इसमें कितना करंट फ्लो करेगा। देखिए यहाँ पे 1 वोल्ट है, यहाँ पे 2 वोल्ट है, तो करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, right? So let us take this is I. So value of I will become how much, right? 2V. Total resistance is 3R, and the potential difference will become 2V. So that will become right, and both are in opposite polarity. So this will become 2V minus V upon 2R plus R. So that becomes V upon 3R. So this is the value of I there, right? Okay. Now right, now I need to find the potential difference across this. So let us see. So let us take here the potential is 0 volt. Okay, so here the potential will become how much? This will also be 0 volt. So this will also be 0 volt. Okay, so if this is 0 volt, so this will become how much? V. Okay, now now if you'll see this is 0 volt, so this will become 2 volt now. Okay, so what is the potential difference across 2R now? I into R. Potential difference across 2R will be equal to I into R. So I is how much? See, V upon 3R, and the resistance of this is how much? 2R. So 2R. So this will get cancelled out, and this is becoming 2V upon 3. So potential difference across 2R is equal to 2V minus 3. So from here in the direction of current potential decreases. So here the potential will become 2V minus 2V upon 3. So this will become right 4V upon 3. Okay, so the potential is here 4V upon 3. So this will get continue here. So we'll get here 4V upon 3. Now see what is the potential difference across C. Now you can simply say this is higher potential, this is lower potential. So potential PD across capacitor is equal to, see this is 4V upon 3 minus how much? V. So you will get here V upon 3. So this will be the answer. So V upon 3 is C. Okay students, I hope you understood this question.